Hello, Assalamu alaikum everyone. So welcome to Coffee with CEO by CEO Club Pakistan and Management House. And by the way, we do this show because we want you guys to take inspiration from the real success stories of Pakistan. And today I'm really very proud and happy to have a brand here next to me, that is Johnny Jugnu. So whoever is in Lahore, I think so they are in love with Johnny and Jugnu. And by the way, this brand emerged as a brand in last 7 years or 8 years? 7 years. Yes. 7 years. So please welcome Gohar Iqbal, who is the co-founder and managing partner in Johnny and Jugnu. How are you? I'm Alhamdulillah very well. Thank you for having me here. So why the people are so much in love with your burgers, Gohar? I think, you know, we are, as Lahoris, we love food. I mean, when we're not having food, we're talking about food. So I think it's just part of the culture. So because we are Lahori, so we love food. But उससे तो कोई देसी खाना ख्याल में आता है. How come burgers is such a success here in Lahore? So I feel like एक चीज that works is our food is tailored to I think the local population. Like you know, it's more palatable to us. And even when we were starting this, I feel like you know what they generally say is कि you know अगर आपका personal pain point होता है for something, so then you produce the wow results. So for us, like you know, back when we were in university, we would have fast food, and the one thing we felt was like it's not for us. In that इसमें कुछ add करें तो, or it's not fulfilling, it's not that big enough, so that we still feel hungry. Or we would go to McDonald's, like McDonald's or Subway, and we would be very aggressive case में sauce extra डालें, and you know like, and you know, so we felt those patterns, and when we wanted to do it ourselves, हमने कहा कि यार okay, let's do it in a way that we would like doing it, and like we would want to be the customers ourselves, and I think that clicked with the Lahori audience and you know people. Now tell me about your industry in general. So you're competing with the multinationals, McDonald's, Subway, KFCs, and how is the industry going right now? Right now, things are tough. Very tough? Yes. Because of the inflation thing? Actually, or the competition is very tough. नहीं देखिए, competition has always been tough because food की barrier to entry बहुत low है, and this is one of the reasons why we also started doing it. When we graduated, we didn't have obviously capital or access to certain resources, so you know you end up gravitating towards industries जहाँ barrier to entry is कम है, right? अब obviously I can't set up a factory for something, I don't have the resources, but food is something you can start, right? And actually जब हम बात करते हैं, so this industry is probably the second or the third biggest in terms of the people it employs, right? Okay. So अभी एक recent example थी, we went close to the border अभी यहाँ, and वहाँ भी एक गांव आता है, तो उस गांव के अंदर भी there's a person who's selling zinger burgers, उसने बिल्कुल छोटा सा setup लगाया है. There's no barrier to entry. Or you need to invest very little to start something, right? And even one person can do it. Even बाहर जो रेडी लगी हुई है, to some extent it is a food zinger burger activity, right? Yes, it is. They're in the food industry. So barrier to entry बहुत low है. So competition has always been tough. Challenges different exist करते हैं. So इस वक्त जो challenge exist कर रहा है is one जो I think थोड़ा सा unprecedented है, because generally हमारी industry के अंदर हमें variable cost pressure है, which is just the fact कि हमारी ingredient cost जो है, जो naturally पाकिस्तान का एक वो trajectory है कि वो inflation आती है. But for the first time what we're facing is both a variable cost pressure but also a fixed cost pressure. So that means the rents are getting double, the inventory is getting double, everything is getting double. So it's a double hitter in that sense, because generally what has happened before this is that you'll have the food cost going up, but other things haven't sort of, you know, gone up by such a huge percentage in a very short period of time. So is because we're facing like a double hitter, which is something that's, I think, at least in my 7 years I haven't seen it. I'm sure the industry has gone through this earlier as well. And and the customer is not ready to pick up that hit, by the way. देखिए, obviously they're not, because wages haven't gone up by the speed just say I think prices have gone up in the country historically over many years. You know, I think we all feel this way. So that's been a challenge, and obviously, you know, food at the end of the day, fast food in Pakistan is not a necessity, it's a luxury. Right, it's your entertainment budget. It is. There is no entertainment other than food here. Food or cinema. So what happens generally when you know wages are stagnant and inflation जो है वो बढ़ जाती है, is that you know you creep into your entertainment budget. You're not going to sacrifice your budget for education or for health. For health or for grocery, monthly grocery. Yes, absolutely. So you know this is luxury, right? It's a decision you take. ये करना है कि नहीं करना, it's not mandatory. So obviously you start feeling some pressure on that. But Gohar, I was there across Johnny and Jugnu last night, but there was a queue even then there. जी, absolutely. So does this mean that even the customers are coming with the same pace? Yes and no. Yes and no both. So when you look at the overall industry, it is hurting.
Some players might be even more successful than before. Yes, that's the nature of the industry. So anybody who has a better value proposition might do better. मैं आपको एक और argument दूंगा. Look at the very high end. They all are doing very well. I think they're doing even better than before. Yes, right? Agreed. So when you look at the overall industry, तो आपको नजर आएगा कि shrinkage होती है, but some players win, some players lose. That's I think the rule of the game. So it's not like industries are wiped out. वो evolve करती हैं depending on situations. Now tell us more about Johnny and Jugnu. How the idea came to you? Why you started from the scratch? From the scratch. So क्यों किया? So जब यूनिवर्सिटी में था थर्ड ईयर में I decided that I don't want to get into sort of the corporate cycle. अच्छा, in third year you decided. And what you did then in the fourth year? I don't know, just time pass. Honestly, brainstorming business ideas, trying to convince my friends कि यार कुछ चीज शुरू करते हैं. लोग कहते होते थे तब उस वक्त नहीं यार कुछ नहीं बनेगा. You have to do the नौकरी. यही this is the right way. How many people supported you for your entrepreneurship idea, by the way? My friends did, because I feel like, जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं तो you just have this optimism वैसे ही कि you can do anything, so and daydreaming is part of the university life as well, right? So उस वक्त हमें था, जो probably हमने 7 साल में किया, हमें लगा था हम 1 साल में. Guys, by the way, Gohar is a LUMS graduate, so he is talking about his third year in the university when he had this idea and his friends were supportive. My idea in third year was that I'm going to start something. Something, okay. When I graduated उस वक्त honestly that's the only thing I had in mind कि मैंने कुछ खुद करना है. मेरे partner हैं Dr. Dan, who was my professor at LUMS, and I developed a very very close relationship with him. He's my mentor. He's a brother to me. And मैंने एक चीज़ का फैसला किया कि if I want to continue my lifetime of learning, then I need to involve him in whatever I'm doing in life. Wow. And he was very young to decide that, by the way. but like after university, a lot of things you have to seek out, na? So you get learning in university because it's institutionalized, but after that you have to make an effort to do it. So I thought if I have the right person around, so he'll be with you always. मैं सीखता रहूँ. Done. I'll get advice. आपने idea से पहले बंदा choose किया. हाँ, so I said कि हमने करना साथ है. He wasn't really interested in care, but मैंने उनको push किया, and obviously because we had a good relationship, so over time he was willing to. He agreed. He agreed. I personally consider myself to be a student of marketing. So one of the first things I did was start an advertising agency. Number one, that was your idea, okay? हाँ, so Sheikh Chilli के नाम से we started an advertising agency. Oh, Sheikh Chilli. हाँ, I love the name. मतलब it's just me and another partner वो कराची से थी, and we tried to do something over there. How long you tried? So I'll come to this. So वो शुरू किया. उसके अलावा we said okay, maybe we can do like a food delivery platform. तो वो भी मतलब it's just you tried that too. The rule was we would say yes to anything that came our way. Wow. Oh. We didn't know कि हमने क्या करना है. इसी तरह then Dr. Dan contacted me एक बार, and he said that he wants to set something up in like a small fast food joint or like a food joint. उस वक्त there was a very new idea, and he said you want to partake. And मेरा rule ये था कि just yes to anything that comes your way. And because the mentor calling, so मतलब there was no. I'll do it. And I thought that it'll be a good exercise for my marketing agency. So चलो like हमें कोई काम. You started it to support that Sheikh Chilli. Obviously I couldn't bill them, but I thought at least कोई muscle तो exercise होगा ना उसके अंदर. Customer तो मिला, client तो मिला. So and वही free hand भी मिल जाएगा. इन्होंने मुझे क्या कहना है, right? So we set up the first Johnny and Jugnu 2014 June के अंदर. In Krishnagar. This is not something people know. No, I thought that your first branch is somewhere near Garden Town. DHA, that's the one people know about. But actually, हमने 2014 कृष्णनगर से शुरू कृष्णनगर में शुरू किया था, नेहरू पार्क के सामने. कितनी छोटी जगह पे? Rented. जगह बहुत बड़ी थी, किराया बहुत कम था. क्योंकि कृष्णनगर था. हाँ, उसका किराया था 7,000 रुपए. अरे वाह. जगह बड़ी थी because वो गाड़ियों की ना वो ट्यूनिंग की वर्कशॉप थी, बट वो बंद हो गई थी. तो उस बंदे का घर था ऊपर, नीचे उसने वो जगह हमें दे दी. हमने 50,000 रुपए में OLX से सेकंड हैंड फ्रायर उठाया, हॉट प्लेट उठाई, सिलेंडर उठाए, उसका काउंटर उठाया और साइन बोर्ड उठाया. साइन बोर्ड पे अपना फ्लेक्स लगाया और चिपका दिया. इसके अलावा हमने पेंट का बजट था हमारे पास, तो हमने वो अंदर से पेंट किया. So about maximum I think probably 10% of the place हमने यूज की बिकॉज हमारे पास पैसे नहीं थे. बाकी को डेकोरेट करते, चेहरे वगैरह लगा के. जॉनी एंड जुगनू नाम कैसे ज़हन में आया? So there's multiple inspirations for it. On a strategic side of it, we wanted a name जो आपकी attention grab करे. 7 years down the line, लोग मुझे अभी भी when I meet them, they ask me, what is Johnny Jugnu, right? And as a marketer, that's what I want. I want you to ask me something so I can sell you a story.
Done, 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 So simple done. as that. अगर नाम सुने आप and You you're not had Sheikh interested, Chilli, ना? आपकी advertising agency भी थी, So तो you Sheikh know all Chilli the भी, you know, rules. it invokes the feeling, right? Why And Johnny Sheikh Jugnu Chilli? also invokes curiosity, and that's the first thing as a marketer you want to do. On another flip side, obviously, like हमारे डॉक्टर दान के कजन है, उनका नाम जॉनी है, एक को उसका निकनेम जुगनू था. They were standing in front of us जब हम नाम सोच रहे थे. So you know, we just sort of went with it, and a lot of it was just, you know, like we weren't. You just did it. हाँ, we were just doing things जो आ रही चलो बस जल्दी से करो. Flex लगना है तो मतलब you just you wanted the name immediately. Honestly, मेन्यू भी नहीं तैयार हुआ हुआ था जब तक हमने लॉन्च किया. ठीक है. And फिर सबसे पहले क्या मेन्यू में लॉन्च किया? We had the chicken burgers उस वक्त. ठीक है. जो मतलब लिटरली हम घर पे बना के लाइक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और रिश्तेदारों को खिला रहे थे. But honestly speaking, जब हमने आपने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट भी किया. हमने जब ये नेहरू पार्क में जगह ली थी ना, तो हम उसको कहते थे ये हमारी लैब है. हमें ये पता था कि हमने बंद होना है, क्योंकि हमें इस काम के बारे में तो कुछ नहीं पता, राइट? एंड मतलब यू नो ह्यूब्रियस हो सकता है, बट आपको पता था यार मतलब प्रोबेबिलिटीज बंद होंगे. मतलब फ्रायर नहीं देखा हुआ कभी जिंदगी में, तो मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी विल वर्क? देयर इज नो शेफ इन द कंपनी. तो फिर डिड यू गॉट द शेफ? नो. So one rule we've always had in the company, there's no chef in the company, and आज तक there's no chef in the company. What does that mean? What it means is, you know, the company should have knowledge, but it should not be centered to. Anyone can make the burgers. Yes, actually, so some products जो actually हमारी अभी launch हुई है recently, वो हमारे management office के अंदर somebody was cooking them, and we thought they're nice, so we just launched them. And I think that's, you know, it's just decentralized in terms of development. वाह. बाकी ये था कि नेहरू पार्क के लोग बड़े अच्छे थे, उनको खाना अच्छा नहीं लगता था, तो कहते थे कि मैं अब आपके साथ खड़े होकर आपको बना के मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह होना चाहिए. सो आई फील लाइक द शेफ्स वर द पीपल इन दैट एरिया. हां, एंड फ्रॉम द विसिनिटी दे केम अप एंड दे सेड कि हम बना के दिखाते हैं. अब इसमें ना ये चेंज कर लो, इसकी ये थोड़ा मिर्च डाल दो. हां. सो एंड आई स्टिल यू वर डूइंग द कस्टमाइज्ड थिंग ओवर देयर. जो जैसा कहता था वैसा बना देते थे. वो फिर कहते थे कि ये अच्छा नहीं था, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने करना है, वरना मैं कभी दोबारा नहीं आऊंगा. तो एंड यू नो लाइक वी weren't मतलब we were fine with it, you know, like we're learning something. तो लोग अब फीडबैक दे रहे हैं, उस लिहाज से we kept changing whatever we are doing. ठीक है. And that 1 year वहाँ कृष्ण नगर के अंदर it was all in losses or what? Oh, absolute losses. पक्का losses. But what kept you doing? Why you kept it doing? So that's 6 महीने बाद बंद क्यों नहीं किया? 8 महीने में बंद किया था. अच्छा किया था. 8 महीने में बंद कर दिया था. But had we not done that experiment, जहाँ we failed without burning money, तो without burning a lot of money, तो आई थिंक हम शायद आगे ना जाते. यू नो लाइक अगर हम सारी पैसे उधर जला देते तो आई फील लाइक हमारे वो जो होते थे ना, आपकी हिम्मत खत्म हो जाती है, enthusiasm, आपका पैशन सब रह जाता. We failed, but we failed without burning money, you know, like बहुत थोड़े पैसे चले in that sense, in the largest टाइम जला. मगर टाइम तो मतलब टाइम ही टाइम था. आप ग्रेजुएट है, जॉब कर नहीं रहे, तो एक ही चीज आपके पास. तो वो 6-8 महीने में मगर आपके घर वाले, फैमिली, सब लोग फिर बहुत ज्यादा ये कहते हैं ना कि भाई यू आर अ ग्रेजुएट, क्या करने जा रहे हो, बर्गर बेचने जा रहे हो, कुछ ये वाला चक्कर था. वो तो बहुत ज्यादा होता है. ओए लड़की अच्छी नहीं मिलेगी. बट यू नो लाइक आई थिंक यू जस्ट हैव टू बी अ बिट श्योर अबाउट व्हाट यू आर डूइंग. मुझे याद है लम्स में मुझे जब ना हमारे वो जो रिक्रूटमेंट साइकिल होती है ना, सो ये सारी एमएनसीज आ रही थी और रिक्रूटमेंट कर रही थी, तो एसडीएसबी के अंदर ये सेशंस होते थे. सो आई वुड सिट ऑन द बेंच आउटसाइड एंड आई वुड रियली क्वेश्चन माई सेल्फ एंड बी लाइक यार पता नहीं 2-3 साल में पता चलेगा इफ आई एम द इडियट और दीज गाइज आर राइट. तो बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई फील लाइक at the end of the day, with all of the hard work, there's luck is a huge element as well, right? Luck as well. So timing and luck. मतलब luck is what do they say? It's timing mixed with you know hard work. But that's the case. So that branch was closed. उसके बाद आपने क्या किया? So उसके बाद जो टाइम मिला उसमें कुछ और ट्राई किया? उसके अलावा द मार्केटिंग एजेंसी वो तो चल रही. शेख चिल्ली वाज गोइंग ऑन. हम अपनी वो जो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है उसकी वेबसाइट बनाने की कोशिश कर रहे थे. वो आई थिंक एक न्यू बड़ी इन्फेंसी में था वो. And I feel like जब हमने इसको बंद किया तो we took like 2 or 3 months off for Johnny and Jugnu. And then I remember मैं डॉक्टर दान के अपार्टमेंट में बैठा हुआ था and we were just talking about what we want to do next, right? So what's the next thing we'll do? And we wanted to do like a juice का brand, like bottled juices, which is something we will still do someday because हमारा ultimate goal, dream ये है. My next question will be this. Okay, not healthy. Just fun. Food has to be good for the soul. आप enjoy तो करें ना, like you know मजा आए आपको. फिर how you came back to Johnny and Jugnu? So हम वहाँ बैठे हुए थे and we were just talking about things and I don't know how that conversation sort of matured, but हम बात ही कर रहे थे कि यार
you know what, the burgers were good, at least हमें बड़ा मजा आता है. So and we were like यार किसी दिन बनाते हैं, like मेरा दिल कर रहा है खाने का. चलो दोबारा करते हैं. हाँ, so we're just having like a casual conversation. For हम बनाते हैं, हाँ, like you know तो हमें तो पता है कैसे बनते हैं, तो किचन में बना लेते हैं जाके. And यहाँ से कहीं से बात शुरू हुई, and I think Dr. Dham was like यार दोबारा करना है. And I was like, and you said yes. I said like कर लेते हैं, ठीक है. Like that's it. There's no data to point के चलेगा दोबारा, anything like that. You know, looking back now, you can make sense of everything. So we just said we'll do it again. तो तब हमने ये किया कि हमने वो इक्विपमेंट सारा पड़ा हुआ था हमारे पास. So we put in, I think maybe 300 or 500,000 rupees. That was the time you did the investment. हाँ, so we chipped in 500K, I think, जिसमें से 250 मैंने किया, 250 टाइप उन्होंने किया, something like this. I'm not entirely sure, but I remember the budget was very limited. And we said we'll get a place now closer to home, because वो distance बहुत ज़्यादा है पहली चीज़, right? And then all of the mistakes that we've made. We won't be repeating it here. हाँ, so we won't be repeating it. मैंने ना सीख लिया था, इतनी गलतियाँ वहाँ की थी कि अब ये पता था कि यार ये रिपीट नहीं करनी. We'll make the new mistakes, we won't make the old ones. That is when we launched the DHA outlet, Sector Double C के अंदर. उस वक्त उसका 17,000 rent था, which was our upper limit in terms of rentals. हम क्या कर सकते हैं. And I think we just, you know, we did it again. अब क्योंकि we had failed once, तो वो खौफ निकल गया था. We were very conscious too. You failed once, you know what's the worst that'll happen, you'll fail again, right? So वो आपका डर निकल जाता है. And I feel like जो डर निकल गया था ना, तो we were very aggressive now. हम वो फूक के decision नहीं ले रहे थे, you know. So we were like, हाँ, just do it, you know, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, and like, and all of the mistakes we'd made. And you learned from them too. And there's one I want to talk about. So मुझे याद है जब हम कृष्णनगर में खोल रहे थे ना, तो इलाके में जितने भी लोग गुजरते थे ना, वो मोटर बाइक अपनी रोकता था, उसकी फैमिली, उसकी बीवी पीछे बैठी हुई है, बच्चे बैठे हैं, सर किधर क्या खोल रहे हैं, अच्छा रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, मैं ज़रूर आऊँगा, क्या बनाएंगे आप लोग, यू नो. बट जब तक हमने वो दुकान खोली ना, वो भूल गए. और मैंने एक चीज उस दिन मैंने ना रियलाइज की कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर ना अटेंशन स्पैन इज वेरी स्मॉल, एंड आपके कंज्यूमर का जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी टू गेट हिम थ्रू द डोर इज द फर्स्ट टाइम दैट द पर्सन हियर्स अबाउट योर ब्रांड. जब आप उसी वक्त बेच दो. जब आप रोज किसी दुकान के सामने से गुजरते हैं ना, रोज आपका ना इंटरेस्ट वहां से कम होता है. पहले दिन आपको होता है मैं अंदर देखूं क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस, यूर इंक्विजिटिव. तो वो हमने देखा कि वही लोग जो मुझे वादा करते थे ना, अब वो मुंह छुपा के ना बाइक से रोज कि यार कहीं ये बुला ना ले. सो आई लर्नड दिस थिंग ना. तो जो गलतियां की थी, जो मिस्टेक्स थी, उनको यू नो अब ठीक तरीके से उनको. So might be you were offering instant discounts or you were welcoming them a lot कि वो फौरन अंदर आए. That was your strategy. We've never done discounts. And I'll give you the background for this as well. So ना हमने 17th October 2015 को हमने ये DHA में लॉन्च किया. This is the one people know about. 31st October आ रहा था, which was Halloween. And what we wanted to do was, I called Dr. Dhan and I said, यार, I want to do like a 31% discount. You know, to get people to come. 31st October, ठीक है, done. I'll never forget what he told me. He said कि यार अगर 4 साल मुझसे मार्केटिंग पढ़ने के बाद तूने डिस्काउंट दे रहा ना, तो तेरे पे डिग्रीज आया. And that thing has just, you know, been a part of the company DNA ever since. And we decided that we're not going to build a brand on price. Even if price is strategically something which is good, जो हमारी है, but we're not going to build a brand on price. सस्ता बेच के नहीं कमाना. सस्ता होने की वजह से नहीं चलना. राइट. सो द रूल वाज कि आपने ना, क्योंकि प्राइस तो देखें, जिसने सोच लिया वो तो 100 रुपया महंगा भी ले लेगा. जो स्टोर पे भी, मतलब विदाउट द मैनेजमेंट एजुकेशन भी जो बंदा कर रहा है यहाँ, अनफॉर्चुनेटली इवन एजुकेटेड मैनेजर्स भी वो प्राइस पे खेल रहे हैं. इट्स ईजी, राइट. बट इफ यू वांट टू बिल्ड अ ब्रांड, इट कांट बी बिल्ट ऑन प्राइस. वो वैल्यू प्रोपोजिशन जो कंज्यूमर की है, इट हैज टू मीन. सो देयर वर नो डिस्काउंट ऑन 31st ऑन हैलोवीन. कोई डिस्काउंट नहीं हुआ. तो फिर क्या हुआ? Why Johnny Jugnu was a hype then? So, what worked was some aggressive advertising campaigns. Around vicinity? No. हमारा बजट था 40-45 हज़ार रुपए. ठीक है. मार्केटिंग बजट रह गया आफ्टर द डबल सी वाली दुकान. एंड अब हमने कहा कि 40 हज़ार रुपए में ना वी नीड टू मेक समथिंग ऑन सोशल मीडिया. ऑब्वियसली सोशल मीडिया. शेख चिल्ली was there. हाँ, शेख चिल्ली was there. So मैंने उनको कहा यार बताओ क्या करें ना. सोशल मीडिया की यू नो ROI सबसे अच्छी है. 40,000 में तो पैम्फलेट भी फिकवाते तो शायद वो 3-4 गलियों तक से ज्यादा नहीं जाते. सो वी सेड यार कुछ बनाते हैं, विल मेक एन एड. एंड बट वी सेड यार इफ यू मेक एन एड 40,000 में, इट्स गोइंग टू बी हॉरिबल. यू नो, ना बजट है, ना कुछ है, कुछ क्या, ना कैमरा है, ना लाइट है, आईफोन से एक्टर्स को भी पे कर, मतलब नहीं हो सकता. So we said it'll be bad, and then I think somebody proposed an idea. They said if it's going to be bad, why don't we just make the worst ad on earth? You know,
वो तो हो सकता है 40,000 में, बनाओ इतना बुरा कि एवरीबॉडी विल वॉच इट। लाइक यू नो इफ इट पासेस वो बैड की टेरिटरी एंड जस्ट सुपर बैड हो जाता है, तो वो भी कल्ट क्लासिक है, लोग देखेंगे, एंजॉय करेंगे, हम पे हंसेंगे, बट देखेंगे तो ना, बद से बदनाम। अच्छा ना। So then we just decided to make like the worst ad on earth, and I think alhamdulillah we were very successful in doing it. तो वो मैंने डॉक्टर दान को ना रेस्टोरेंट पे गया, मैंने उनको ऐड दिखाया, वो अंदर काम कर रहे थे, मैंने उनको बाहर बुलाया। सो वी ऑल यूज्ड टू वर्क, सो डॉक्टर दान, the quality was bad in that ad or the concept was bad? हुआ क्या? Everything was so bad. 7 years down the line, I still cannot show this ad to anyone. ठीक है, I feel a bit odd showing it. Great. It did the job. तो मैं डॉक्टर दान को बाहर बुलाया, मैंने कहा यार आप आए, मैं आपको नहीं ऐड दिखाता हूँ, ऐड बनाया। उन्हें ऐड दिखा, फिर मुझे देखते इतना घटिया। And then he says, गौहर या हम बंद हो जाएंगे, हम चल जाएंगे। ठीक है, and I was like यार देखिए पहले तो बंद हो गए थे एक बार, so क्या होगा, दोबारा बंद हो जाएंगे। Okay. And we just put it up. That ad I think like in a day went up to like 6 लाख views, फिर 2.1 million views, and इंडिया से मैसेजेस आ रहे हैं, people, so it was so bad कि हर बंदा अपने दोस्तों को टैग करी जा रहा था कि यार ये क्या बकवास है, ठीक है। और मेरे जितने जानने वाले थे वो मुंह छुपा के फिर रहे थे कि यार के लोगों को किस तरह बताएं, बट इट डिड द जॉब, राइट। सो हमारा नाम हर जगह चला गया। या but the thing is good marketing will only bring in customers once, so you know लोगों को था यार मैंने जाके देखना है ये कौन सा है जिसका इतना घटिया ऐड है, ठीक है। सो वो जो कुछ बॉयज होते हैं ना यूनिवर्सिटी वाले, वो क्या चला यार वो सब के सब मतलब ग्रुप्स आ गए। But what we were fortunate with was I think the fact कि you know अच्छी marketing will get you in once, but if the service and product isn't good, then you won't come back again. So what worked there was that जब the quality of the burgers, then they liked it, and then you know like the rest is sort of history, you know, वो फिर चलना शुरू हो गया, काम बेहतर होना शुरू हो गया, and that's now tell us more about Johnny and Jugnu. Number of people working there, number of branches. So we did the first branch, ये जो जिसका लोगों को पता है 2015 में, 16 में we did another outlet in 11 months. उसके बाद I realized कि because the first branch was so much success, so that's why you did the second branch. हाँ, in our aspect, जिस तरह हमने सोचा था, हमने तो कभी ये नहीं सोचा था कि इतना सक्सेसफुल होगा, right? We were taking it very casually also. अच्छा, अब जब ये दूसरी दुकान खोली ना, तो मुझे लगता था ये बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट है, like you know कि मैंने कमाल हो गया है। Turns out it's the easiest part of the job. To open an outlet, it's the easiest part of the job. All you have to do is spend money. Running them जो है ना is the real pain in. जो मैंने 2 दुकानें खोली ना, उसके बाद जो मार पड़ना शुरू हुई, everything was a problem. Everything was a problem. You know, employees को handle करना, customers को handle करना, suppliers. अब you know मैं अल्फाता से 4 किलो मुर्गी per day लेता था. That's how we started. अब वो जो वॉल्यूम ऊपर जाना शुरू हुआ, 40 किलो हो गई, वो अल्फाता नहीं कर पा रहा. You know, you have to go and find distributors. The new vendor. Like I think the quality is an issue. So we tanked. Very honestly, जब हमने दूसरी आउटलेट खोली, so एक स्पाइक था and then और फिर नीचे आए. And that is when we realized कि okay यार, this isn't as easy as we thought it is. And the other thing is कि if we have to do it properly, so we have to make a decision about why we're doing this. End goal क्या है? So what started off as a very casual thing has picked up now. So we have to decide क्या करना है. One of the decisions was I decided I'm not going to do anything else. I'm going to shut down the other companies. I'm just going to do this. Because it has to take you know all of my time. Then what we decided was कि हमारा ultimate goal क्या है, and you know a large part of why we also call it Johnny Jugnu is that we wanted to be Pakistan's representation of fast food. Hi. You know. Wow. And there's a very specific. Is there someone else who is the motivation for this as well? कोई और brand है जो इतना known हो? I'm sure होंगे, but you know, for us that what that means is that we're not just competitive Pakistan में, but we are competitive international chains too. So we said okay यार, ये horizon quality इतनी कमाल होगी, ये mission vision statement आ गया, this is the day we'll be satisfied. So पाकिस्तान में चलो अकबर आपने तबाही बिजनेस भी कर लिया, but अगर आप बाहर internationally competitive नहीं, तो इसका मतलब you have not done well. So we haven't done well. So whether 2 branches or 20 branches, you have to give that sort of quality. The point is that you need to compete with the best. ये कहना आसान है वैसे. अब करने में अभी तक हमसे मतलब you know we're in that journey. So हमने कहा ये गोल है. So what we started doing was that we started hiring a corporate team. अब फॉर अ छोटा सा बर्गर जॉइंट कॉर्पोरेट टीम रख रहा है, कॉर्पोरेट टीम रखना, like nobody understood this and it's very hard for a brand like us to find people as well, right? So I remember जब हम हायरिंग करते थे तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हमें आके कहते हैं यार मैं घर वालों को क्या बताऊंगा कि मैं बर्गर बेचता हूँ. घर वाले पूछ रहे हैं कि मुझे रेस्टोरेंट के अंदर काम करना है या कि दफ्तर होगा, you know. तो ये एक जर्नी थी, इसमें कई साल लग गए, and for 4 years we did not open a single outlet.
अच्छा। एंड वी सेड नहीं, वी गोना बिल्ड अ टीम, हमने ERP इंप्लीमेंट क्वालिटी बनाएंगे, क्वालिटी बनाएंगे, सप्लाई चेन करनी है, हमने वेंडर्स जो हैं वो ढूंढने कंप्लीटली हैं, सॉलिड हो, हैजप सर्टिफाइड हो, ये चीज़ें हो, वो चीज़ें हो। वी स्टार्टेड सीकिंग आउट द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, सो वी सेड विल गेट द बेस्ट वेंडर्स, जो भी सबसे अच्छा पाकिस्तान में, हमने उसके बाद जाके काम करना है। हमारी वॉल्यूम इतनी कम थी, कोई सीरियस नहीं था, तो हम जाके लड़ते थे कि हमें आपसे खरीदना है, so other way around, right? So we were like, we had just whoever's the best, we have to work with them. इसमें हमें कुछ 4-5 साल लगे टू डू दिस एंड कॉर्पोरेट टीम सेटअप करने में, स्ट्रक्चर्स में लोग आते गए जाते गए, कंपनी कल्चर बनना शुरू हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, हमने ट्रेनिंग स्कूल्स बनाए अंदर, वो सारी चीज़ें की, एंड देन वी डिसाइडेड दैट नाउ वी वांट टू एक्सपैंड. व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग इट, आई थिंक 1 महीने बाद कोरोना आ गया. Right? Your third branch in Corona was there. So, हाँ, थर्ड ब्रांच अभी हमारी ग्रे स्ट्रक्चर में थी, हमारे सारा कैश भी लग गया उसके अंदर, और वो कोविड आ गया. कोविड में आपने राइज किया या और इट वाज अ डाउनफॉल फॉर यू गाइस? So COVID for the first 2 weeks, क्योंकि everybody wanted to have food too. For the first 2 weeks it was very bad for us because COVID came around the time payroll होता है, right? And for a restaurant industry we are very cash wise ना, like चीजें चलना जरूरी होती है, nothing can stop. And I remember मेरी टीम परेशान थी, मैं परेशान था कि यार अब क्या होने लगा, because we forget COVID का start but it felt like end of the world. Zombie apocalypse फील आ रही होती है, लोग लेस के पैकेट धो रहे हैं, right? And this is, we forget कि क्या ज़माना था. But I remember मेरी टीम की एक कमिटमेंट थी, they said we're not going to give up. We rallied around the fact कि हमारी कंपनी में जो एम्प्लॉइज नीचे क्रू लेवल पे काम कर रहे हैं, we have to find a way to make sure कि इनके कोई चक्कर चलता रहे, सिस्टम चलता रहे. एंड माई टीम, आई रिमेंबर हम हेड ऑफिस में बैठे हैं, वी सेड हम जो है ना हैंड सैनिटाइजर बेच देंगे, कोई कह रहा है हम कुछ कर देंगे, कोई कराची फोन कर रहा है कि हैंड सैनिटाइजर की बोतलें ढूंढो, कुछ करो. वी सेड विल डू समथिंग, यू नो. एंड आई थिंक व्हाट आई लव इज दैट माई टीम हैड दिस फाइटिंग स्पिरिट. दे सेड विल नॉट गिव अप. वहां से फिर हम एक आइडिया, हम होम किट्स बनाते हैं. सो वी सेड लोग खाना तो खा रहे हैं, रेस्टोरेंट पे आके नहीं खाना चाह रहे, बिकॉज अभी आपको नहीं पता कि कोविड हाथ से फैलता है, कहाँ से फैलता है, बट खाना तो लोग खा रहे हैं. इट्स नॉट लाइक कि लोगों ने खाना खाना छोड़ दिया. सो वी गॉट दिस आइडिया कि हम होम किट्स बनाते हैं एंड पीपल कैन कुक आवर बर्गर्स एट होम. सो वील गिव देम पैकेज सॉसेज एंड बन्स एंड they'll do that at their own. एंड वील डू लाइक अ 4, 6, 8 पर्सन मील किट दे देंगे. उसको एग्जीक्यूट करना मेरे लिए एक इंस्पिरेशन थी, बिकॉज माई कंपनी केम टुगेदर. आई रिमेंबर आर्मी के नाकों से छुप छुप के हमारे बंदे जो ना, एंड दीज आर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, वेरी पैशनेट पीपल, वो आते थे रात को, हम शटर खोल के छुप के अंदर लाइटें बंद करके काम कर रहे हैं. आवर इंस्पिरेशन वाज ऑल ऑफ द क्रू मेंबर्स जो हमारे रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं. वी हैव टू मेक पेरोल ऑल द टाइम, नो मैटर व्हाट हैपेंस. एंड वी वर सक्सेसफुल इन डूइंग दैट. सो हमने जब वो किट लॉन्च की, इट वाज अ ह्यूज सक्सेस. वो पूरे पंजाब में जाना शुरू हो गया. सीरियसली? सो वी स्टार्टेड मैचिंग द सेम रेवेन्यूज जो हमारे रेस्टोरेंट्स कर रहे थे, बिकॉज़ लोगों ने खाना तो खाना था. एंड यू नो, same revenues, and at the same time, you know, like, so there was no loss after a month or so. Everything was fine, you know, everything was fine. And and not just, you are very creative. No, I have a great team. अच्छा. I'm whenever I sit with them, I'm surprised कि ये लोग कितने अच्छे हैं. And I think that's the reason why I've been able to do this. So after that, what we've done COVID के अंदर is that we've started opening outlets. So we opened 3 outlets in 1 year during COVID. So we but now you're master of doing things, executing things, na? Yes. Because there is a practice of 4 years behind this. So we went from 2 to 5 outlets in 12 months. Since then we've taken a gap. So हम 1 साल और हो गया of not opening outlets. Because now we're strategizing how we want to expand and what we want to do in the future. Yeah. So where do you see Johnny and Jugnu 5 years down the road? 5 years down the road, कहाँ जाएगा? कहाँ जाना चाहते हैं हम is something that depends on the market. But what is important for us is Faisalabad, Gujranwala. So we want to do the major cities in Pakistan. Then? But what's more important, and this is the rally call inside the company. So आप कंपनी में किसी को भी मिले ना, मैं एक्चुअली आपको कहूँगा, आप जाके ना नीचे रेस्टोरेंट में किसी एम्प्लॉय से भी पूछें, तो कहगा सर हमारी इंशाल्लाह पाकिस्तान से बाहर आउटलेट आएगी. Like हमारी rally call जो है inside the company is that we want to be internationally. And you wanted this when you were on your second outlet, है ना? This is not new. This is something which you are living with. You and your team are living. Even from the name की inception, a lot of it has to do with this. You know. By the way, I remember there was some bad time on Johnny and Jugnu जब कोई आपके ऊपर एक इल्जाम लग गया हुआ था, ये निकल आया वो निकल आया. How you guys dealt with that? मतलब दुनिया पागल हो गई थी, भाई बंद कराओ इन्हें. They don't teach you this in university. अच्छा, there's no course on this. So it happened, आप सो रहे थे और आपको मैसेज आया. मैं ऑफिस बैठा हुआ था उसमें. अच्छा, ऑफिस बैठे हुए थे, चुपकली निकली थी. That's what people claimed. That's what people claim, yes. But देखें इसके अंदर जो लेसन है ना, वो it's very simple. I feel like crisis management is something जिसके अंदर what is important is एक तो ये that information needs to be.
It was a huge mess that time. एक कोर्स था, ठीक है, वो क्राइसिस मैनेज इंफॉर्मेशन के बारे में था, ठीक है. So it said that you have to be very sure about gathering a lot of information before you react to it. Okay. And then I'll tell you something very interesting. The next day, when this happened, we had the highest sales of our company yesterday. ना करे. Which is something I don't know, like, you know, like I was also shocked, but I guess people were just curious कि so मतलब more people came in rather than repelling. There is no such thing as bad publicity, to be very honest. मैं ये चीज़ बताऊंगा, and also because of the fact that, you know, our consumers knew us, so we built that relationship with them. Those who are eating since so long, Yes. like I know And so many of your loyal customers. Yeah. And generally what you see is that we build very open kitchens. So हमारा जो even पहला double C वाला kitchen था, you can see anything inside. We've always kept this. My next question from Gohar Iqbal: why it's only a fast food restaurant? Why not something healthy, man? Please. देखिए, हेल्दी की एक परसीव्ड डेफिनेशन है और हेल्दी की एक एक्चुअल डेफिनेशन है. देखिए, I really don't like this smile. आप you are not promoting the healthy eating. So what we want to do, and हमारी जो space है, is that we don't want people to obviously consume what we're selling all the time. Consuming anything all the time isn't healthy anyways. You need to have a balanced diet and आपका सारा एक होना चाहिए. But when you want to really have fun, have a good meal that is good for the soul, that is our segment. You know, so there are. So nihari is good, pies are good, kadhai is good, burgers are good, but we cannot think of salad in the same way. That's what you are saying. No, there are brands who specialize on this, yes. And I feel like जो इसको specialize करते हैं, they'll be able to do a better job than us. हम जिस चीज में specialize करते हैं, we'll be able to do a better job on that. और आप करते हैं in the real food that soul is good for good the soul. food. Yes, you know. So you call your burgers soul good food, huh? Yes. Okay. So what's your favorite in your menu? My favorite in the menu keeps oscillating between the fillet and the wrap. So आजकल wrap है, but थोड़े दिनों पहले वो fillet था. हाँ. Tell me some very good experiences of being co-founder for Johnny and Jugnu. कोई ऐसा experience कि किसी ने आपको आके बहुत appreciate किया हो? Something random या कुछ funny? So I still get calls during the day कि मैंने order place करना है. So क्योंकि पहले मेरा नंबर होता था, एंड अभी भी मुझे कॉल आती है रात को 2 बजे कि जी ऑर्डर प्लेस करना है. फिर आप क्या करते हैं? मैं कहता हूँ सर वो मैं वहाँ काम करता हूँ, बट ये मेरा नंबर नहीं, अब ये लाइक यू नो ये नंबर है, आप यहाँ ऑर्डर प्लेस कर लें और कर लें. सो आई गेट दोस कॉल्स एंड इट्स फन, लाइक हम हंसते हैं, बट आई डोंट नो इट्स फन दैट वे, लाइक यू नो, लाइक सो जब हमने शुरू किया था आई वुड इवन डिलीवर ऑर्डर्स, तो मैं बाइक पे जाके ले आता था जाके. So you know, I like to have that connection. That memory, those memories. Sometimes when I'm very bored and I don't get to do it as much as I used to do it, but मैं counter पे जाके खड़ा हो जाता हूँ, but I won't tell anybody like a customer कि I'm the owner or something. And then वो झाड़ता भी है, you know. So आपको ना actually सारी ego निकल जाती है, बड़ा मजा आता है. You know, आप 2 दिन नीचे काउंटर पे खड़े ना, आपके कस्टमर ने आपकी तबीयत साफ कर देनी है. They'll tell you who you are and they'll put you in your place. तो बेगम आपको देख के मिली, आपके बर्गर से इंस्पायर होके मिली? अभी नहीं है. अच्छा अभी नहीं. And as such, so sorry. So just work at the moment, you know, like these are the key things. और कोई ऐसा बुरा एक्सपीरियंस जो आपको आज तक याद हो? बुरा एक्सपीरियंस मेरे लिए जो चीज़ रही है ना, 2 चीज़ें हैं. एक तो ये कि there's a mentality in Pakistan that something local cannot be good as something foreign. And ये चीज़, you know, just annoys you at the end of the day. The people are committed कि वो कुछ बुरा साबित करके ही रहेंगे. हाँ, but you know, I also believe कि you know एक ये ताली दोनों हाथों से बजती है वाली चीज़. So I feel like local brands over years have not really lived up to those expectations as well. So this is a fight that I want to fight, and this is something जो मुझे थोड़ा सा demoralize करती है कभी कभार. The other thing is sometimes there are people in the kitchens, and this is something very personal to me. Who have a very different opinion about career growth, and I don't know if this is the right forum to talk about this, but a lot of kids we have a very different opinion on what they want to do about their future. So any trolls which you remember and you were like, oh क्या किया ये लोगों ने? कोई trolls ऐसे आते हैं आपको? देखिए, इस business के अंदर you need to have a very thick skin and a very short memory. So you know that's the best way to keep smiling. 3 leadership qualities you think a CEO must have, especially in the hospitality industry? Oh, that's very simple. So you have to be people focused. Right? Service driven. Done. Right? And at the end of the day, you need to know everything about your business. That's okay. Of your business. Okay. Yeah, your message of hope and optimism for the youth. Hope and optimism. There is no country like Pakistan. I feel like देखें, अगर मैं एक matured, saturated industry जो 80s में mature कर गई थी दुनिया में, उसके अंदर आके grow कर सकता हूँ. So it tells you Pakistan में honestly किसी चीज़ पे हाथ रखो and have the dedication,
you can do it. You know? Thank you so much, Gohar, for coming over. It was such a wow discussion we guys had, or we have taken lots of inspiration from you. Your this thing, passion of keep on going. Pehla flop, Sheikh Chilli, and then one more, and then the delivery service, and then COVID. First man, this is such a wow spot on thing, and I wish हमारे बच्चों को ये सारी बातें समझ आए. Whenever they are going to eat Johnny and Jugnu, they take the inspiration as well कि एक बच्चे ने कैसे एक छोटा सा joint शुरू किया, उसको fail किया, उसके अलावा कितनी चीजें fail की, and then finally he came up with the brand that is able to compete with the international one. So thank you for coming over, and keep rocking the show, but also please add on some healthy options to your menu. We'll Thank do you for something coming. for you.